to Wednesday? Wednesday. Now, R. Giriranjan demand to take steps to control the leakage of obnoxious gases from factories, plants in North Chennai. Sir, I would like to raise an important issue. This also connected with the earlier matters, which affect the life of the people of the North Chennai. People living in Thiruvattriyur, Manali, Ernaur, Madavaram areas of North Chennai are spending sleepless nights due to the obnoxious gas stench and air pollution caused by both public and private companies. For the past several years, the pungent odor has been emanating from various companies. Due to this, people suffer from problems like sneezing, shortness of breath and eye irritation. They are unable to sleep the night and bed odor persists throughout. Stench of ammonia gas is coming out from the Union government-owned MFL fertilizer company in Manali and a privately owned fertilizer factory in Ernaur. There are CPCL and DPL and private companies that manufacture pharmaceutical ingredients. People are not able to breathe properly due to the smell of the gas. People of this area fear getting dreaded diseases like cancer and lifelong skin disorders. Time and again, it was found about such foul odors are emitted from these factories. The Central Pollution Control Board has to investigate thoroughly and need to pinpoint from which factory the obnoxious gas is coming out, since the companies are union government PSUs. It is prime responsibility of union government to stop the obnoxious gas emission from the PSUs and find an appropriate solution to this grave issue. Therefore, I urge the union government to take appropriate action on a war footing to control the obnoxious gas leakages from the companies at the earliest. Thank you, sir. Thank you. The next, Kabita Patidar, demand for installation of information boards containing detailed history of temples and prominent places in their premises. Kabita Patidar. सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संस्कृति एवं इतिहास को चिरस्थायी बनाते हुए कई मंदिरों का पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ भारत की सनातन सभ्यता और संस्कृति का पुनरुद्धार भी देश में जोरों से हो रहा है। आज अयोध्या के भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीधाम तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। साथ ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला है। हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है और इसी कड़ी में अति भव्य महाकाल लोक भी अतीत के गौरव के साथ भविष्य के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। इन जगहों पर देश के अलावा विदेश से आने वाले लोगों की संख्या बहुतया से बड़ी है। इसलिए हमें मंदिरों का इतिहास और अपनी संस्कृति का व्याख्यान उचित माध्यमों से उन स्थानों पर करना चाहिए ताकि सभी भारत के गौरवान्वित इतिहास और संस्कृति से भली भांति परिचित हो सके। इसलिए मैं निवेदन करती हूं कि मंदिरों के इतिहास को विस्तृत रूप से प्रदर्शित करे। ऐसी जानकारी का बोर्ड मंदिरों में स्पष्ट नजर आने वाली उचित जगह पर लगाना चाहिए, जिससे वहां आने वाले लोगों को मंदिर के इतिहास की संपूर्ण जानकारी मिल सके और वो भारतीय संस्कृति से पूर्णतया जुड़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला, demand for recruiting young people in contract basis under Vidyapat scheme on lines of Agnipat schemes. Not present. Ms. Dola Sen, concern our national pension scheme. Thank you, Vice Chairman, sir.
for allowing me to deliver my speech on concern over new national pension scheme as special mention submission. The national pension scheme is a tragedy for retiring personnel. The pension under the current plan is just 15% of the pension under the previous one. Asserting that the national pension scheme is a catastrophe for retiring employees in their old age, multiple employees have also written to the Cabinet Secretary or else pleading for the restoration of the old pension scheme. For instance, a defense establishment official who recently retired after more than 13 years of service, according to this federation, would only receive 15% of the assured pension he would have normally gotten under the old pension scheme. After more than 15 years of service, another official with a base wage of rupees 34,300, sir, received rupees 2,506 only as a monthly pension, although under the old pension scheme he would have been entitled to rupees 17,150. The new pension scheme personnel are worse off than old pension scheme employees, despite paying a monthly contribution of 10% of their income throughout their whole employment. The new pension scheme pension is static, and unlike the old pension scheme, there is no dearness relief to offset inflation or price increases. There is an urgent need to address the employees' concerns and take necessary steps to include dearness relief as a part of the pension scheme and restore the old one. I therefore urge upon the central government to take steps to address these concerns. Already, most of the profitable central government concerns are going to be disinvested. So, the central government service and reduced pension both in deep distress and affecting the employees and we the people of India badly. Thank you, Chairman, sir. Message from Lok Sabha, Secretary General. Mike. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 15th December 2022 passed the Constitution Scheduled Tribes Order, Second Amendment Bill 2022. I lay a copy of the said bill on the table. Srimati Sansad Television. Thank you, sir. I would like to draw the kind attention of this august House that in spite of the fact that tea is one of the most popular and low-cost beverages in the world, owing to its increasing demand, tea is considered to be one of the major components of world beverage market. Above all, Indian tea is among the finest in the world owing to strong geographical indications. Yet, tea gardens in Darjeeling Hills are suffering as never before. I humbly urge the august House to draw the kind attention of the Prime Minister to urgently provide financial help and set up an export committee, find solution to the greatest Indian industries revival. Thank you, sir. Dr. Sasmit Patra. Deputy Chairman, sir. मेरा सब्जेक्ट है महिला आरक्षण विधेयक को भारतीय संसद में जल्द से जल्द पारित किया जाए। मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि महिला आरक्षण विधेयक को भारतीय संसद में जल्द से जल्द पारित किया जाए। महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना देश के 66 करोड़ महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। वो भी तब जब भारत अपनी आजादी के 75 साल और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 की अध्यक्षता कर रहा है। महिला आरक्षण विधेयक को पारित कर भारत विश्व के सामने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है।
लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण उनको नेतृत्व के नए अवसर देगा और भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने में कारगर सिद्ध होगा। मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक और मेरी पार्टी बीजू जनता दल महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित करने के लिए कई सालों से मांग कर रहे हैं। 2018 में श्री नवीन पटनायक जी ने 22 राजनीतिक दलों को बीजू जनता दल के प्रतिनिधि मंडल भेजे और इस विधेयक को संसद में पारित करने के लिए समर्थन मांगा। कई राजनीतिक दलों ने इस मुहिम को समर्थन भी दिया। 2019 लोकसभा चुनावों में श्री नवीन पटनायक जी ने 33% लोकसभा सीटों पर महिला प्रत्याशियों को टिकट दी और उनमें से कई आज लोकसभा में सदस्य हैं। मान्यवर, मैं विनम्रता के साथ फिर से अपनी मांग को दोहराता हूं कि महिला आरक्षण विधेयक को भारतीय संसद में जल्द से जल्द लाया जाए। धन्यवाद। श्री ए रहीम। Thank you, sir. Thank you for this opportunity. The subject related with deaths on the duty of railway trackman due to negligence of authorities. The railway trackmen and keymen are essential workers in the railway who carry out the track patrolling and ensure that the rails are safe to ply on and hence ensure the smooth functioning of the railways. This is a high-risk job as they have to work on the tracks while trains are still running. Every day, these workers are putting their lives on the line for the railways and hence for our country. In the Thiruvananthapuram division of Southern Railways, 13 keymen met a fatal accident while on duty in a short period. There is already a device called the red check or rail passing indicator, which is a handheld device which can alert the workers of the incoming trains. However, these have not been provided in Thiruvananthapuram division. They should also be provided walkie-talkie devices while working in single line sections. The keymen also have to work alone without any supporting staff, and this is also a risk to their safety. There is also the centuries-old practice of manual monsoon patrolling, which is completely avoidable if mechanized patrolling is introduced. A special risk allowance also must be instituted for the employees working as keymen. The ministry should urgently take up these measures to ensure that the brave workers working as keymen are not fatally accident while on duty due to such completely avoidable circumstances. Thank you, sir. Thank you. Shri Vivek Thakur. मेरा विषय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के परिप्रेक्ष्य में है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसने करोड़ों लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराया है। परंतु बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए पात्र परिवारों का नाम सम्मिलित करने हेतु आवास प्लस योजना ऐप ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या 370-600 दिनांक 23/5/2018 द्वारा खोला गया था। प्रखंडों से प्राप्त आवेदन के अनुसार 2,27,676 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से आवास प्लस पर मात्र 10,106 लाभुकों की ही एंट्री की जा सकी थी। ग्रामीण आवास कर्मियों की हड़ताल के कारण जांच उपरांत शेष लाभुकों को एंट्री नहीं की जा सकी। अतः गरीब लाभार्थियों के हित को देखते हुए सरकार द्वारा पुनः आवास प्लस ऐप को खोलना आवश्यक, जिससे मुजफ्फरपुर जिले के गरीब पात्र लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
प्रशासन की हड़ताल का नुकसान सभापति महोदय गरीब जनता को न भुगतना पड़े, इसलिए सरकार द्वारा पुनः आवास प्लस ऐप को खोलना नितांत आवश्यक है। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर अमी याज्ञनिक। For allowing me to raise an important topic, which is need to upgrade healthcare facilities in rural areas. Despite increasing infrastructure for healthcare, hospitals and other medical facilities are still out of reach for a large and vulnerable section of our country, especially in rural areas. For a simple ambulance care service, many people who do not have access to facilities and are economically unable to afford slip into debt. Large section of rural population who needs these facilities due to non-availability have to be left to fend for their health themselves. The pandemic and its aftermath has exposed the weakness of the public healthcare system. The 2017 National Health Profile data showed that there is only one government doctor for every 10,189 people and one government hospital for every 90,343 people. The number of hospital beds per 10,000 population decreased between 2010 and 2020. Currently, India ranks 155th among 167 countries in terms of bed availability and has 5 beds and 8.6 doctors per 10,000 population. The major problems are acute shortage of skilled personnel, gaps in healthcare infrastructure, non-availability of medicines, lack of advanced laboratory facilities and equipment, and a severely constrained healthcare workforce. The infrastructure of primary, secondary, and tertiary health services in major rural areas has not improved satisfactorily. Keeping priorities of healthcare to be made available to marginalized people, weaker sections of our society, and in far-off rural areas, I urge the government to come up with a comprehensive long-term and short-term plan of action to strengthen and change the way the health services are organized and funded both at the national and subnational levels. Thank you. Thank you, sir. Shri Rajya Krishna. Respected sir, the National Food Security Act was implemented to help needy beneficiary, but 1,56 lakhs poor people in Andhra Pradesh are being denied coverage under National Food Security Act. In Andhra Pradesh, the number of persons covered under National Food Security Act is 2,68 lakhs, amounting to 60.96% of the rural population and 41.14% of the urban population. The Act itself stipulates that coverage extended up to 75% of rural population and 50% of urban population. NEET Ayog has already recommended revising coverage to AP and providing our state all the unutilized grain from other states under National Food Security Act. The overall unutilized quantity of rice under National Food Security Act is 3 lakhs tons per month, and our state's requirement is only 77 tons per month. Therefore, the unmet demand of AP can be met from this unutilized quantity with no additional burden on the central government. Concerning this gravity of the matter at hand, I request the government to take cognizance of the same at the earliest and authorize the distribution of unutilized grain in AP. Thank you. Sri Ramchandra Jagra. मैं किन्नर समाज द्वारा बढ़ती हुई भिक्षावृत्ति के चिंतापूर्ण विषय को सदन के सामने रखना चाहता हूं। महोदय, यद्यपि किन्नर समाज भी हमारे समाज का एक अंग है तथा भारत का नागरिक है जिसे उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, परंतु बहुत जगह शहरी निकायों में चयनित किन्नर वर्ग के जनप्रतिनिधि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, लेकिन आजकल इस समाज में बेहुदा तरीके की भिक्षावृत्ति का प्रचलन बढ़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के हर प्रमुख चौराहे पर लाल बत्ती आते ही दर्जनों की संख्या में किन्नर गाड़ियों के शीशे थपथपाने लगते हैं
उनका व्यवहार इतना शर्मिंदा करने वाला होता है कि परिवार के साथ गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 2 मिनट की लाल बत्ती का समय पहाड़ के समान लगने लगता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सामाजिक श्रम के इस अपराध को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा किन्नर वर्ग को कौशल रोजगार जैसे व्यवहारिक व सम्मानजनक कार्यों से जोड़कर सम्मानित जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू। श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ले। Honorable Deputy Chairman, sir, thank you very much for giving the opportunity to mention the bifurcation issue of Dr. B.R. Ambedkar Open University, Andhra Pradesh from Telangana state, sir. Microphone. Sir, the AP Open University was renamed as Dr. B.R. Ambedkar Open University by Government of Andhra Pradesh in the year 1991. The establishment of this university, the first of its kind, was the first open university in our country. After the bifurcation of the state, there are 76 study centers in Andhra Pradesh, wherein currently 26 regular employees, 13 pensioners, and 436 part-time employees are working, and the student strength for the year 2019-20 is 35,354. As the bifurcation of the university has not been completed, the fee collected from first, second, and third year graduate students, PG students, and diploma students is 11 crores per annum, is paid from all the study centers to university in Hyderabad. In addition, the GPF and other contributions of the staff, around 36 lakhs per annum, are all going to the same university. But the AP government is paying the salaries, pensions, and cash benefits, and retired employees' remunerations and honorariums to part-time employees till date. In the case of Telugu Academy, the Honorable Supreme Court was ordered to divide their assets and liabilities and funds as per GO number 243, as per distribution of funds between AP and Telangana states, was agreed to be 58% and 42% respectively. Like these, there are so many issues in between AP and Telangana states, sir. I request the Honorable Prime Minister through you, sir, to intervene in this regard and solve the problem as soon as possible. Thank you, sir. Thank you. Shri Samir Urao. Present. Yeah. Yes. उपसभापति महोदय, झारखंड के गुमला जिला में चिंगरी नवाटोली गांव के एक आदिवासी परिवार में वर्ष 1888 में जन्मे जतरा टाना भगत का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। 1914 में उन्होंने ब्रिटिश राज एवं जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन चलाकर लगान, सरकारी टैक्स भरने तथा कुली के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया। यह वर्ष उन्होंने औपनिवेशकों और सामंत विरोधी धार्मिक सुधारवादी आंदोलन किए। इन आंदोलन का बड़ा हिस्सा 1940 के दशक में गांधी जी के सत्याग्रह से जुड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुआ। अपने समय में वहां के टाना भगत आंदोलन अहिंसक सत्याग्रह के व्यवहारिक समझ की आश्चर्यजनक मिसाल है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि ऐसे जनजातीय व्यक्तित्व की स्वाधीनता संग्राम में भूमिका को रेखांकित करने हेतु इनके गांव में इनकी आदमकद प्रतिमा स्थल पर स्मृति स्वरूप एक प्रेरणादायी संग्रहालय निर्माण, पार्क निर्माण एवं सौंदर्यीकरण किया जाए। श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अत्यंत लोक महत्व के विषय पर आपका, सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। महोदय, हिंदी भाषा सहित देश की समस्त मातृभाषाएं व्यक्तियों को केवल भावों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति,
सभ्यता, भारतीय अस्मिता, एकता, अखंडता, प्रेम, स्नेह, भक्ति और भारतीय जनमानस को अभिव्यक्त करने की भाषा है। विचारों का जन्म और विकास मातृभाषा की गोद में से ही होता है। भारत की सभी भाषाएं अत्यधिक समृद्धशाली हैं, परंतु विदेशी भाषा अंग्रेजी की ठसक है। महोदय, भाषा के रूप में अंग्रेजी तथा विश्व की किसी भाषा का ज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन भारत के लिए अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि यह पराधीनता का स्मारक है। माननीय पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी ने हिंदुस्तानी राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाहों के मन में घर बना रखा है। मैं उसे अपने देश और मनुष्यत्व के लिए अपराध मानता हूं। महोदय, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व स्थापित कर राजभाषा हिंदी तथा देश की अन्य मातृभाषा भाषियों और अंग्रेजी जानने वालों के मध्य वर्गभेद और वैमनस्य पैदा हो रहा है। कष्ट तो तब होता है जब हिंदी तथा देश की अन्य मातृभाषाओं के प्रकांड विद्वान भी अंग्रेजी भाषा बोलने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं अति विनम्र शब्दों में सभी से निवेदन करता हूं कि हिंदी तथा अपनी अन्य मातृभाषाओं के प्रति हीनता का भाव नहीं, श्रेष्ठता का भाव प्रकट करने की आज आवश्यकता है। माननीय, मैं सदन और सरकार से राजभाषा हिंदी का कड़ाई से पालन करने और देश की समस्त क्षेत्रीय मातृभाषाओं के अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए दीर्घकालिक नीति निर्धारित करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री मोहम्मद अब्दुल्ला, एम मोहम्मद अब्दुल्ला। Honorable Vice Chairman, sir, thank you for allowed me to raise an important issue here. Sir, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thalapathy M.K. Stalin, had written a letter to Honorable Prime Minister requesting him to take necessary steps to secure the future of those medical students returned from Ukraine due to Russia-Ukraine war. Sir, since the beginning of the conflict, around 2,000 medical students from Ukraine have returned to Tamil Nadu, the largest number among all the states in our country. Given the current situation in Ukraine, it may not be practically possible for these medical students to immediately return to their college in Ukraine, and the uncertainty is likely to prevail even after the cessation of hostilities. Considering this, sir, Government of Tamil Nadu has been repeatedly urging the Union Government to take necessary steps to accommodate these students in India or in suitable universities abroad. Sir, these students can be accommodated in either government or private college by creating additional seat as a one-time measure. Since these students shout education in Ukraine due to their inability to pay the higher fees in private medical colleges in India, a special dispensation may be considered in the form of a comparable fee structure in private medical college in India, similar to the fees paid by the students abroad. Hence, I call upon the Union Government to direct the NMC to initiate steps to bring in necessary amendments in the relevant central acts to enable these students to continue their studies in medical colleges in India, and we can save their educational life, sir. Thank you. Shri Leher Singh Siroya. 2 मिनट में आप कहिएगा, क्योंकि सीमा जी का भी सब्जेक्ट सेम है, तो उनको एसोसिएट करना है। ठीक है जी। मेरा पहला अवसर है ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आपका धन्यवाद. Request Union Government to immediately take more strict action against use of technology apps and the dark web to combat online drug smuggling. Sir, I want to draw the attention of the government regarding drug running racket that is being operated through social media and instant messaging apps. I urge the government to take immediate and stringent steps to combat the menace of the online drug smuggling, sir. Last week, it was reported that the Bangalore Narcotic Control Bureau arrested 27 people across the India, including a foreign national, artists, techies, and students from 2 Bangalore colleges, for smuggling and selling contraband drugs. These arrested were said to be part of larger drug running racket that operated through social media and instant messaging apps, sir. In 2021 and 22 alone, the enforcement agencies has made a record seizure of
contraband, including drugs, valued at rupees 20,000 crores, sir. Recently, the Honorable Supreme Court too observed that drugs are a problem and adversely affect the health of people, especially youth, sir. The smuggling in India reported 2021-22, which was recently released by the Honorable Finance Minister, states that new tactical tools for drug law enforcement is necessitated by the use of dark web, cryptocurrency and social media platforms to solicit customers and sell drugs. Considering these new technology-based methods to smuggle drugs, there is an urgent need to continuously evolve to develop new tactical tools to check the sale of drugs online, especially through the dark web, and ensure timely and effective action against the drug menace to combat the online drug smuggling. Sir, मैं इस पर 2 घंटे का एक डिस्कशन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये समस्या भी बहुत गंभीर है। श्रीमती एसोसिएट करना जी। महोदय, मेरा आज का विषय युवाओं में नशाखोरी के प्रति बढ़ते रुझान के संबंध में है। महोदय, भारत एक युवाओं का देश है। भारत में तरक्की का रास्ता युवाओं की सोच से गुजरता है। नशा व्यक्ति ही नहीं, परिवार ही नहीं, बल्कि समाज को कमजोर करने वाला एक जहरीला जहर है। कम उम्र के बच्चे, जिनकी उम्र 12 वर्ष से 15 वर्ष अथवा उससे ऊपर से है अथवा उनसे ऊपर से है, जो नशे से उत्पन्न होने वाले हानि के बारे में, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वह परिवार से संबंधित हो अथवा सामाजिक निंदा से संबंधित हो, उनसे अनभिज्ञ रहते हैं, जिनका परिणाम यह होता है कि कुछ ही अंतराल के बाद वह व्यक्ति नशे की लत में शिकार होकर आपराधिक गतिविधियों, यहाँ तक कि अपने माता पिता, भाई बहन अथवा किसी की भी हत्या कर देता है, जिसका तमाम उदाहरण पत्र पत्रिकाओं एवं न्यूज चैनलों के माध्यम से देखने को मिलता है। महोदय, युवाओं को भटकने का सीधा अवसर समाज के साथ साथ देश के ऊपर भी पड़ता है और देश की तरक्की भी इससे प्रभावित होती है, क्योंकि जब जब देश का युवा सही रास्ते पर चला है, तब तक देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। आज के परिवेश में हम सबको नशा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर चिंता करना अत्यंत आवश्यक है। देश में नशा के कारण कम समय में ही जीवन को खतरा बढ़ता है। किसी तरह अपनी जीविका चलाने वाले परिवार अपनी युवा पीढ़ी के बच्चों को नशा करने के कारण बहुत और भी टूट जाते हैं। और महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मेरा आज आपसे मेरा यह अनुरोध है कि नशाखोरी के नाते परिवार समाज तो टूटता ही टूटता है, सब लोग कमजोर होते हैं। तो महोदय, मेरा आपसे मेरा यह अनुरोध है कि इस विषय पर सरकार कोई ठोस कदम उठा करके इस पर कानून बनाने की कृपा करे। श्री विप्लव कुमार देव। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से हमारे राज्य में स्थित बॉर्डर हाट की शुरू करवाने का आग्रह करता हूं। त्रिपुरा में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर पश्चिम त्रिपुरा जिले के कमला सागर और साउथ त्रिपुरा जिले के श्रीनगर में साप्ताहिक बॉर्डर हाट लगता है, जिसमें दोनों देशों के दुकानदार आकर स्थानीय सामान बेचने और खरीदते हैं। पर्यटकों के लिए भी वो स्थान आकर्षित करता है, मगर कोविड काल में दोनों बॉर्डर हाट बंद कर दी गई है। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कोविड स्थिति सामान्य होने के बाद मेघालय राज्य के अंतर्गत आने वाले बॉर्डर हाट को खोल दिया गया है, किंतु त्रिपुरा के बॉर्डर हाट को नहीं खोला गया है। इस बाबत त्रिपुरा सरकार के इंडस्ट्री विभाग ने केंद्र सरकार के मामले को हस्तक्षेप कर बांग्लादेश सरकार से बात कर हमारे राज्य के बॉर्डर हाट शुरू करवाने का आग्रह किया है। महोदय, बॉर्डर हाट का संचालन देखने के लिए बनी ज्वाइंट बॉर्डर हाट कमेटी दोनों तरफ से जिलों के डीएम है। इनके बीच वार्ता में हमारी ओर से डीएम ने बॉर्डर हाट शुरू करवाने के विषय में उठाया है, मगर बांग्लादेश प्रशासन की ओर से कोई कारण नहीं बताकर बॉर्डर हाट क्यों नहीं शुरू कर रहा है, जिसके वजह से कई स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। अतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मामले में जल्द एक्शन करते हुए बांग्लादेश से त्रिपुरा बॉर्डर हाट शुरू करवाए और कमलपुर के मेराछरा
और धर्मनगर में शुरू होने वाले बॉर्डर हाट को कार्य के तेजी लाए। धन्यवाद। श्रीमती संगीता यादव। माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे स्पेशल मेंशन पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस सदन को भी प्रणाम करती हूँ। मैं आपका स्पेशल मेंशन में सिलकोशिश जैसे एक संवेदनशील मुद्दे पर बात करना चाह रही हूँ। महोदय, देश भर में विशेषतर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और प्रयागराज के शंकरगढ़ में पत्थर गड़ाई और खदानों में काम करने वाले हजारों मजदूर हर साल सिलकोशिश जैसे भयावह बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। उपसभापति जी, यह बीमारी बड़ी ही दर्दनाक है और बहुत ही मैंने खुद भी इसको कई मजदूरों से मैं मिली हूँ, इसलिए मैंने देखा भी है। जो लिखा है वही पढ़िए। सरकारी बड़ी बड़ी इमारतें और आलिशान पत्थरों को ये मजदूर गढ़ते हैं। इन घरों में लगने वाले पत्थरों को तराशने गढ़ते हुए ये मजदूर इस लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आंकड़े के अनुसार सन 2000 में लगभग 1 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में आए थे। इसमें अधिकतर असंगठित मजदूर हैं जिन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। जो खदान कंपनियों और ठेकेदारों के लिए सोना उगलती है, उन्हीं खदानों में मजदूरों को मौत की सौगात मिल रही है। महोदय, इस बीमारी से पीड़ित मजदूर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ देते हैं, वहीं पर उनका परिवार इलाज कराते हुए कर्ज में डूब जाता है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि मजदूरों के लिए जो श्रम कानून बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन हो, और मैं सरकार से ये भी निवेदन करना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ इन मजदूरों को मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जगेश। ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. Expediting the 4-lane construction of road NH 75 between Bangalore and Mangalore. Ongoing work of 4-lane construction of road NH 75 between the capital city of Bangalore and Mangaluru is relatively slow compared to the other road works in Karnataka. The stretch between Sakaleshwara to Maranalli is totally destroyed, and traveling on this stretch will be a nightmare for the people. Slow progress has caused inconvenience to the industry and trade as it takes longer to reach the capital. Around 16 kilometers of stretch from the Donigal to Maranalli from Shiradi on NH 74 is totally destroyed. Works on BC Road to Gundia between Sakleshwara and Hassan is also going on. Works on many stretches are going on slower than expected, and due to one-way and diversion, vehicles have to move very slowly. Karnataka state-run buses operating on this stretch are also incurring huge loss due to increased travel time and a long diversion route. Especially during monsoon season, traversing of these stretches will pose danger even to lives of passengers and drivers. The commercial activities of Bangalore are dependent on the only major port city of the state, Mangaluru, and large-scale industries like Mangalore Refineries, Petroleum Chemicals Limited, New Mangalore Post Trust, and Mangalore Special Economic Zone are in the coastal district. Present road condition is causing enormous loss to their business and also affecting daily use items like vegetables, fruit, groceries reaching Bangalore to Mangalore and vice versa. Therefore, I urge the government to expedite the long pending work on these stretches on priority basis and complete the work without the further delay. Thank you. Dhanyavad. Sambhu Sharan Patel. महोदय,
आज का मेरा विषय बिहार प्रांत के पटना जिला स्थित बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के संबंध में है। उपसभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन जो कि बिहार प्रांत के पटना जिले में स्थित है, उस स्टेशन का नाम बदलकर भगवान बुद्ध अथवा चंद्रगुप्त मौर्य या आचार्य चाणक्य के नाम पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने जिस तरह से बंगाल और बिहार में रक्त बहाया था, बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी के दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी विश्वविद्यालय नालंदा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वहां रखी सारी किताबें जला दी गई, पूरे विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को मार डाला गया। जो विदेशी शिक्षक एवं विद्यार्थी थे उन्हें भी बख्तियार खिलजी ने मार डाला एवं हजारों बौद्ध धर्म के मानने वाले और बौद्ध भिक्षुओं एवं बौद्धिस्टों को का कत्लेआम कर डाला। जिस आक्रांता ने हमारे गौरवशाली इतिहास को रौंदा है, उस बख्तियार खिलजी के नाम से भारत के किसी रेलवे स्टेशन का नाम हो, यह हम बिहार वासियों पर एक अभिशाप है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार प्रांत के पटना जिला स्थित बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री कार्तिकेय शर्मा। Thank you, Honorable Vice Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on this important issue and subject of encouragement of woodless cremation in crematoriums. Cremation was practiced largely in India and Nepal initially, but now has become popular amongst other communities due to scarcity of land. India has only 28 trees per person compared to China, which has 102 per person, or USA, which has 716 per person. Average cremation per body needs 2 trees, which leads to 400 to 600 kgs, and there are about 110 lakh deaths annually in India, of which 70% are cremated, which need wood, consuming around 260 crore kilograms of 50 million trees. While burning the wood, there are emissions close to 80 million tons of carbon dioxide gas and 5 lakh tons of ash, which is obviously not good for the environment. The main drawback of the traditional method of open fire cremation are air pollution, high ash, and methane emission due to wood, and finally deforestation. Studies reveal that a normal cremation needs 500 to 600 kilograms of firewood, liters of ghee, 3 to 400 cow dung cakes. The total cost of the cremation may go over 10,000 rupees. I would request the government to encourage green crematoriums which uses only cow dung. Hence, we can save our environment and ecology. Experts say that only 3 lakh rupees is enough to set up a green crematorium. I urge upon the central government to take necessary steps to arrange funds from various sources like CSR funds or KAMPA, which is compensatory afforestation, concerned panchayat, municipalities, corporations to set up green crematoriums in each and every village of the country to avoid pollution, reduce deforestation, and protect the environment. Thank you very much. The House is adjourned to meet at 11 hours on Friday, the 16th December 2022.